Hello, students. Welcome back to Next Gen Legal Minds, and today we'll start with a new concept, new topic under Copyright Act, that is subject matter of copyright. So, under this, we'll look into a important section, that is Section 13 of the Copyright Act 1957, that talks about the subject matter of copyright and or the matters in which copyright subsist. So, moving on, first we look into that what is a copyright act and what are the what are the different sections mentioned under it. So this particular act came into force on 21st January 1958, or this copyright act has been amended several times, notably in 1983, 84, 1992, 1994, and so on. So it means that we by this we can analyze that copyright act has been amended several times. So the Act consists of 79 sections divided into 5 different chapters, and this is applicable to the whole of India according to Section 1. So this was a little crisp about the Copyright Act 1957. Now what is copyright? We have already seen in different videos that what is a copyright, what are different concepts of copyright. So here copyright or the author's right, we also say copyright as a author's right, is a legal term used to describe the rights that creators have over their artistic work, literary work, music work, painting, sculpture, films, computer programs, and etc. So by this we can say that copyright is a author's right which gives the exclusive right for the protection of the literary, artistic, musical, dramatic, and so on. सो सेक्शन 14 विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे सब सेक्शंस 14 के, सेक्शन 14 के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. सो अभी देख लेते हैं बस सेक्शन 14 बोलता क्या है. सो सेक्शन 14 इज द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट. Defines copyright as exclusive right to do or authorize the doing of any of the following acts in respect of the work or any substantial part thereof. So following acts, कौन से following acts? सेक्शन 14 के अंडर देयर आर डिफरेंट सबसेक्शंस जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इन दिस वीडियो विल लुक पर्टिकुलरली विद रेफरेंस ऑफ सेक्शन 13. So, copyright is a exclusive right to do or authorize the doing any work. So, now what is Section 13? Section 13 means works in which copyright subsists. So, Section 13 क्या बोलता है कि copyright protection is available only to the specific categories of the work mentioned in this act. So, जो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो भी अगर आपको अपना कॉपीराइट प्रोटेक्ट करना है तो आप कौन सी कैटेगरीज ऑफ वर्क के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो. So, originality is mandatory requirement for literary, dramatic, musical, artistic work. So, जब हम सेक्शन 13 का लैंग्वेज देखेंगे उसमें इन 4 चीज़ों के आगे ओरिजिनल वर्क लिखा है. तो इट मीन्स दैट फॉर पर्टिकुलर कॉपीराइट ओरिजिनलिटी इज़ अ mandatory requirement, as we have already studied the test of originality. So copyright के लिए original is very important. So copyright exists by operation of law, meaning registration is not compulsory. So under Copyright Act, registration for the copyright is not mandatory, it is not compulsory, because we have already seen that copyright is an automatic right. Works not falling under these categories are not protected under the copyright law. So कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी वर्क सेक्शन 13 के अंडर फॉल नहीं कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर वर्क विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट. सो मूविंग ऑन टू सेक्शन 13, which is a very important section. So subject to the provisions of this sections and the other provisions of this act, copyright shall subsist throughout in India. Copyright shall subsist throughout India in the following classes of work. These are the following classes of work that protects the copyright. First is original literary, dramatic, musical, artistic work. Second is cinematograph films, and last is the sound recording. So these are the particular works which are protected under the Copyright Act 1957. अब हम इनको एक एक करके समझेंगे. So the first is clause
Section 13, Clause 1, Subclause A that talks about the original literary, dramatic, musical and artistic work. तो पहले हम देखेंगे literary works. So what is a literary work? A literary work refers to any work that is expressed in writing on print. जो भी कोई भी work which can be expressed in writing or a print form जिनको हम write करके present कर सकते हैं, that will be considered as a literary work. It is not limited only to the traditional literature like prose or poetry, but covers all the forms of written expression. मतलब literary works is not limited to the traditional literature like poetry, but it will cover all kinds of the written forms. In simple terms, anything expressed through writing that shows intellect effort can be considered as a literary work. सो कोई भी चीज़ जो हम रिटन में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो रिटन चीज़ एक इंटेलेक्ट एफर्ट दिखा रही है या फिर क्रिएटिविटी दिखा रही है, तो वील कंसिडर इट एज अ लिटरेरी वर्क. तो सेक्शन 2O of the Copyright Act defines the literary work, which includes computer programs, tables, compilations, including computer databases. So this was a concept of original literary works. So what are the examples of literary works? जैसे कि हो गया हमारा literary works include a wide range of written and intellectual creation such as fiction, novel हो गया, short stories हो गया, biography हो गया, essay हो गया, textbook, manuscripts, poetry, contribution to the collective means thesis. So these are the examples of the literary work. For example, गीतांजलि लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो that is a well known example of literary work. 5 Point Someone, which is written by Chetan Bhagat, so he is the author according to section 2D of the Copyright Act. Godan by Munshi Premchand. So these are the examples and the well known examples of the literary works. Now moving on to dramatic work. So dramatic work is mentioned under 2H. Section 2H. Okay, so dramatic work includes any piece of recitation, choreographic work or entertainment in a dumb show, the scenic arrangement or acting, form in which it is expressed in writing otherwise but does not include a cinematograph film. So dramatic work obviously will not cover a cinematograph film. And what is a dramatic work? मीन्स कोई भी कोरियोग्राफिक वर्क और एंटरटेनमेंट इन अ डम शो या आपको किसी चीज़ को रिसाइट कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्रामेटिक वर्क. व्हाट आर द एग्जांपल्स? ड्रामेटिक वर्क्स इंक्लूड्स एनी वर्क इंटेंडेड टू बी परफॉर्म सच एज थ्रू एक्टिंग, डायलॉग और मूवमेंट. जैसे कि ड्रामेटिक वर्क मीन्स आप एक्टिंग कर रहे हो, डायलॉग दे रहे हो या कोई भी मूवमेंट एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दैट will be considered as a dramatic work. Like कोई भी शो, कॉमेडी शो हो रहा है तो that will be a dramatic work. जैसे कि प्लेज हो गए, स्क्रीन प्लेज, कोरियोग्राफिक वर्क, डांस, ड्रामा, बैलेट, स्क्रिप्ट, ड्रामेटिक स्केचेस. जैसे कि थिएटर प्लेज है बाय गिरीश कर्नाड, डांस ड्रामाज है लाइक कथकली एंड यक्षांगना. So these are the well-known examples for the dramatic work and it is covered under section 2H of the Copyright Act. Now moving on to musical work. Musical work कहाँ पे written है? Section 2P, which means that a work consisting of music and includes any graphical notation of such work but does not include any work or any action intended to be sung, spoken or performed with the music. So जब आप कोई भी म्यूजिक प्रोटेक्ट कर रहे हो तो that will be protected under the musical work, that is section 2P. What are the examples? Melodies, tunes, written music sheets, staff notations, symphonies, instrumental scores, background music, all these will be considered as a musical work. Now what is the artistic work? Section 2C of the Indian Copyright defines the artistic work, which means a painting, sculpture, drawing, कोई भी map, chart, plan, engraving or a photograph, whether or not such possesses artistic quality, कोई भी architecture work और any other artistic craftsmanship का कोई भी work होगा तो हम इन सबको क्या बोलेंगे? Artistic work. Like मोनालिसा की painting, तो that will be considered as a artistic work because it is a painting. For example, कोई भी painting, drawing, sketches, sculptures and so on are the examples of the artistic work which is covered under section 2C. आई होप इट इज़ क्लियर. सेक्शन कौन कौन से हमने पढ़े? 13(1)A पढ़ा पहले, ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क. लिटरेरी की डेफिनेशन गिवन है 2O में, ड्रामेटिक की डेफिनेशन गिवन है हमारी 2H में, म्यूजिकल की गिवन है 2P में एंड आर्टिस्टिक वर्क की गिवन है सेक्शन 2C में.
तो you have to remember all these section if you want to. Now 13(1)(b, which talks about the cinematograph film. So what is a cinematograph film? Section 2F defines cinematograph film means any work of the visual recording and includes a sound recording. मतलब कोई भी जब आप किसी चीज़ को जिस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका कैमरा जिस तरह से मूव कर रहा है, that will be considered as a cinematograph film. Shall be constituted as including any work produced by any process analogous to cinematographing, including video films. The video films are the cinematograph film only. So, or section 2XXA defines visual recording means recording in any medium. जिस medium के through आप अपनी recording record कर रहे हैं, जैसे कैमरा आप घुमा रहे हैं, जैसे कैमरा राइट लेफ्ट कर रहे हैं, दैट विल बी द विजुअल रिकॉर्डिंग एंड इट विल बी कवर्ड अंडर सिनेमाटोग्राफ फिल्म सेक्शन 13 clause 1 सब clause B by any method including the storing of it in by any electronic means. So visual recording can be stored in any kind of a electronic means of moving the images, as I have already told you, or of representation thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated by any method. So it was the cinematograph film. अब इसके examples देखते हैं. A cinematograph film means any work of visual recording from which a moving image may be produced along with the soundtrack if any. So for what are the examples? Like आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं OTT कंटेंट पे, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा, टीवी सीरियल्स हो गए, म्यूजिक वीडियोज़ हो गई, वीडियो ब्लॉग्स हो गए. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिनेमाटोग्राफ फिल्म. लाइक बॉलीवुड मूवी आई 3 Idiot, यूट्यूब का शॉर्ट फिल्म आया, वेब सीरीज एपिसोड आया आपका OTT प्लेटफॉर्म में. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(b. Now the last is section 13(1)(c, that it talks about the sound recording. So what is a sound recording? According to section 2 clause XX defines sound recording means a recording of the sound. जो भी sound है, अगर आप उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम, इधर मीडियम इज़ नॉट कंसर्न, ऑन विच सच रिकॉर्डिंग इज मेड और मेथड बाय विच द एग्जाम्पल साउंड्स आर प्रोड्यूस. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ साउंड रिकॉर्डिंग. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स? स्पॉटिफाई पे कोई सॉन्ग है, एप्पल म्यूजिक पे कोई सॉन्ग है, मोटिवेशनल स्पीच है, रिकॉर्डेड ऑडियो बुक है, ऑडिबल पॉडकास्ट एपिसोड है, दैट ऑल दीज विल बी कवर्ड अंडर साउंड रिकॉर्डिंग. नाउ हमने अभी पढ़ा सेक्शन 13 clause 1. नाउ वी लुक इनटू सेक्शन 13 clause 2. ये 13(1) बताता है द मैटर इन विच कॉपीराइट सब्जेक्ट सबसिस्ट, मीन्स व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट. सेक्शन 13 clause 2 टॉक्स अबाउट द मैटर्स अंडर विच कॉपीराइट विल नॉट बी सबसिस्ट. मतलब ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जिसमें कॉपीराइट सबसिस्ट नहीं करेगा. सो द कॉपीराइट शैल नॉट सबसिस्ट इन एनी वर्क स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 अदर देन द वर्क टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40-41 अप्लाई, अनलेस इन द केस ऑफ द पब्लिश्ड वर्क. अगर आपका पब्लिश्ड वर्क है, the work is first published in India or where the work is first published outside India and the author is dead, or in the case where the author was at the time a citizens of India. So this particular section talks about and says that copyright will not exist in India unless the following 3 conditions are fulfilled. So अगर आपका published work है तो work and the work is first published in India or where the work is first published outside India, the author is at the date of such publication or in the case where the author was dead at that date, was at the time of this death a citizens of India. So अगर आपका कोई भी published work है और वो work published हुआ है इंडिया में, या फिर आपका वर्क आउटसाइड इंडिया में पब्लिश हुआ है, तो उस टाइम पे द ऑथर, उस टाइम पे पब्लिकेशन के या फिर डेथ होने के ऑथर के, he should be a citizen of India. Means it talks about that in case of a published work, if your work is published in India or outside India, at the time of the publication or at the time of the death of the author must be a citizens of India. ओके और अगर आपका अनपब्लिश्ड वर्क है अदर देन द वर्क ऑफ आर्किटेक्चर इज नॉट प्रोटेक्टेड, इन दिस केस वर्क ऑफ आर्किटेक्चर इज प्रोटेक्टेड. सो इन केस ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क द ऑथर एट द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द वर्क ऑफ इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डोमिसाइल्ड इन इंडिया. अगर आपका अनपब्लिश्ड वर्क है तो ऑथर उस टाइम पे
सिटीजन होना चाहिए या फिर डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, और अगर आपका वर्क ऑफ आर्किटेक्चर है तो वर्क मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया. सो दीज आर द 3 कंडीशन दैट आर टू बी फुलफिल्ड फॉर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन. Now section 13(3) clause 3, copyright shall not subsist in any cinematograph film if the substantial part of the film is an infringement of copyright in any other work, in any sound recording made in respect of literary, dramatic, musical work, if in making the sound recording copyright in such work has been infringed. So these particular terms talks about the infringement of copyright. Then the copyright shall not subsist according to section 13 clause 3. 4 क्या बोलता है? द कॉपीराइट इन अ सिनेमाटोग्राफ फिल्म और अ साउंड रिकॉर्डिंग शैल नॉट इफेक्ट द सेपरेट कॉपीराइट इन एनी वर्क इन रिस्पेक्ट फॉर विच और अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ विच द फिल्म और एज द केस मे बी द साउंड रिकॉर्डिंग इज मेड. Clause 5 talks about in case of work of architecture, copyright shall subsist only in the artistic character and design and shall not extend to the process and method of construction. So this was section 13 which we have covered in detail, in a very much detail. So first we have studied this one second, सेक्शन 13 में ये सब कवर होता है. क्लॉज 1 में हमने ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क देखा, देन सिनेमाटोग्राफ फिल्म देखा, देन साउंड रिकॉर्डिंग देखा. Clause 2 we have already seen, that was this copyright shall not subsist. Then 3, 4, 5 we have already seen. So अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can drop down a comment in the comment section. I'll try to reply to everybody. Section 14 we'll cover in the next video, which is a very important section, जिससे कि आपको पूरे section 13 and 14 will be cleared very easily in a easy language. So students, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.